children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Interdependence in Living Beings, Plants and Animals. Learning objectives. Plants depend on animals, living components of the environment and balance in nature. Plants and animals depend on each other for their survival. Plants provide animals with food, shelter and protection. In the same way, animals help plants in the dispersal of seeds. Animals also provide the nutrients required by plants for preparing food. देखिए आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा होगा और प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि किस तरह से एनिमल्स एंड प्लांट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. Plants depend on animals. Plants depend on animals for many basic needs. Animals breathe out carbon dioxide, which is used by plants to make food. When animals die, they get mixed with the soil by small organisms called microorganisms. Thus, animals are converted back into nutrients, which are used by plants for their growth and survival. Animals also help in the pollination and dispersal of seeds. अब देखिए प्लांट जो हैं एनिमल पे डिपेंडेंट हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं जो एनिमल्स ले लेते हैं, और जब एनिमल्स मर जाते हैं तो मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ, इसको मिक्स करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फिर उसके बाद जो एनिमल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वापस न्यूट्रिएंट्स में एंड देन उसे प्लांट यूज़ करते हैं अपने ग्रोथ के लिए. Animals depend on plants. Animals are directly or indirectly dependent on plants for food. Animals breathe in oxygen that is breathed out by plants. Some animals and birds live on trees. Animals तो plants पे directly and indirectly दोनों ही तरह से dependent है. सबसे पहले तो ऑक्सीजन जो हम breathe करते हैं वो हमें plant से ही मिलता है. Living components of the environment. Our environment is made up of several living and non-living components. Living components include plants, animals, and microorganisms. Non-living components include air, water, soil, light, and warmth. All these components of the environment are dependent on one another for existence. देखिए environment आपका बना है living and non-living things से, and ये दोनों ही चीज़ें यानी कि living and non-living thing एक दूसरे पे dependent है एक दूसरे की existence के लिए. Let us study more about the living components of the environment. Plants. Plants make their own food by the process of photosynthesis using carbon dioxide from the air and water from the soil. The process of photosynthesis takes place in the presence of sunlight and chlorophyll. All living beings are directly or indirectly dependent on plants for food. Plants are dependent on the non-living components of the environment in the following ways. Plants obtain water and nutrients from the soil. They get carbon dioxide from the air and release oxygen in the air. When plants die, they get mixed with the soil as nutrients. प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली अपने प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए. प्लांट्स जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है, जैसे कि प्लांट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं सॉइल से, उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एयर से एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एयर में. जब प्लांट्स मर जाते हैं तो ये मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ एज न्यूट्रिएंट्स. Animals cannot make their own food. They move from one place to another in search of food. Animals are dependent on the non-living components of the environment in the following ways. Animals need water to survive. They breathe in oxygen from the plants and breathe out carbon dioxide. अब animals अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, राइट वो तो डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे, राइट जैसे कि एनिमल्स को वाटर की ज़रूरत होती है, राइट वो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन जो उन्हें एयर से मिलती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं. Microorganisms. Microorganism, very small organism present in the environment. We cannot see them with naked eyes. Most of the microorganisms depend on dead plants and animals to get their food. They feed on dead organisms and release the nutrients from them into the soil. Plants use these nutrients from the soil for their growth. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. तो ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. वो डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, देन न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं सॉइल में एंड फिर प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए. Categories of living components. Based on their roles in the environment, all living components can be grouped into the following three categories: producers, consumers, and decomposers. Producer. The living organism that can produce their own food are known as producer. All green plants are producer as they can make their own food by the process of photosynthesis. Plants use this food for their growth and survival. Plants are then eaten by animals. Thus, we see that producers are the main sources of food and energy to other living organisms. देखिए जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर कौन है आपके? ऑल ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ये खुद से बनाते हैं खाना, राइट.
इसके बाद क्या होता है, प्लांट्स को क्या होता है, प्लांट्स को फिर एनिमल्स खा लेते हैं। तो इस तरह से जो प्रोड्यूसर्स हैं आपके मेन सोर्स ऑफ फूड और एनर्जी हैं टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Consumers. The living organisms that cannot make their own food are called consumers. Consumers depend on plants and other living organisms for their food. All animals are consumers. Consumers can be grouped into three categories: herbivores, carnivores, and omnivores. Herbivores, the animals that eat only plants, are called herbivores. Goats, cows, elephant, giraffes, etc. are the examples of herbivores. कंज्यूमर वो होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। तो जो कंज्यूमर होते हैं वो आपके प्लांट पे या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। तो इनकी भी आपकी 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 हर्बीवोर, जो आपके प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। Carnivores, the animals that eat only animals are called carnivores. Tigers, lions, crocodiles, foxes, hawks, snakes, etc. are the examples of carnivores. Omnivores, the animals that eat both plants and animals are called omnivores. Human beings, bears and crows are the examples of omnivores. Carnivore वो animal होते हैं जो दूसरे animal का flesh खाते हैं, and omnivore तो आपको पता ही है जो plant and animal दोनों ही खाते हैं। Scavengers, the animals that eat the dead plants and animals are called scavengers. They keep the environment clean by consuming the dead plants and animals. Vultures, termites, earthworms, snails, etc. are the examples of scavenger. Scavenger वो एनिमल होते हैं जो डेड प्लांट या एनिमल को खाते हैं और इस तरह से वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका वल्चर्स है, टर्माइट्स है, अर्थवर्म्स, ये सारी आपके स्केवेंजर्स हैं। Decomposers. The microorganisms like fungi and bacteria that eat dead plant and animal matter are called decomposers. When scavengers start eating the dead plants and animals, they break them into small pieces. These small pieces are then eaten by decomposers. Decomposers break down the nutrients of the decaying matter into simpler substances which are then mixed with the soil. Plants use these nutrients from the soil for their growth. The process of breaking down complex nutrients into simpler substances by decomposers is known as decomposition. Thus, the role of decomposers in the transfer of nutrients in the environment is very important. अब आपके देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि फंगी या बैक्टीरिया की बात करें, वो डेड प्लांट और एनिमल को खाते हैं, राइट? और ये क्या है, आपके डीकम्पोजर्स हैं। जैसे स्केवेंजर्स डेड प्लांट्स या एनिमल्स को खाते हैं तो उनको छोटे छोटे पीसेस में कर देते हैं। अब ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं इनको डीकम्पोजर्स खाते हैं। तो डीकम्पोजर्स न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में एंड देन ये मिक्स करते हैं सॉइल के साथ और उसके बाद प्लांट्स इस न्यूट्रिएंट को यूज़ कर लेते हैं सॉइल से। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट बिल्कुल एक सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है बाय डीकम्पोजर्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। फूड चेन. Plants are eaten by animals, animals are then eaten by other animals. This forms a food chain. For example, grass is eaten by a grasshopper, the grasshopper is eaten by a frog, the frog is eaten by a snake and the snake is eaten by a hawk. देखिए प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स और एनिमल्स को खाता है फिर कोई दूसरा एनिमल। तो इस तरह से एक फूड चेन बनती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ग्रास को खाया ग्रासहोपर ने, ग्रासहोपर को फ्रॉग ने खाया, देन फ्रॉग को स्नेक और देन स्नेक को खाया हॉक। तो इस तरह से आपकी एक फूड चेन का फॉर्मेशन हो गया। Do you know a food chain always begin with plants? Food chain आपकी हमेशा और हमेशा plants से ही शुरू होती है। Balance in nature. All living organisms are dependent on one another for food. This interaction for food leads to food chains in the environment. The balance in nature is upset by the presence of new animals or the absence of some animals. It may also lead to the death of other animals and plants. For example, a decrease in the population of carnivores will cause an increase in the population of herbivores. It is because herbivores will not be hunted for food anymore. Then herbivores will eat all the plants in that area. Then herbivores will also die due to the absence of food. Thus, to maintain the balance in nature, all plants and animals are important. अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। तो ये जो इंटरेक्शन होता है फूड का, उससे बनती है आपकी फूड चेन। तो बैलेंस जो है नेचर में वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैलेंस इम्बैलेंस हो गया, अब ये इम्बैलेंस कैसे होता है, जैसे कि कोई नया एनिमल आ गया या कोई एनिमल एब्सेंस, उसकी एब्सेंस में, तो इससे क्या होता है कि दूसरे एनिमल की डेथ या प्लांट्स की डेथ हो सकती है। जैसे कि अगर कार्निवोर्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाए तो इससे नंबर ऑफ हर्बीवोर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब हर्बीवोर्स को हंट करने वाले एनिमल्स कम रहेंगे और फिर क्या करेंगे, हर्बीवोर्स सारे प्लांट्स खा लेंगे एंड देन हर्बीवोर्स भी मर जाएंगे क्योंकि फूड की कमी हो जाएगी, राइट? तो इसीलिए एक बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में।
The balance in nature is also disturbed by natural disturbances such as floods and forest fires and some human activities like hunting, pollution and clearing of land. तो imbalance जो है बहुत सारे natural disturbances की वजह से भी होता है, जैसे flood है या forest fire है, ये कुछ human activities हैं, जैसे hunting है, poaching है, pollution है या land को clear किया जा रहा है. Let us remember, plants and animals depend on each other for their survival. Plants, animals and microorganisms are the living components of the environment. Air, water, soil, light and warmth are the non-living components of the environment. Plants make their own food. Animals cannot make their own food. Most of the microorganisms depend on dead plants and animals to get their food. Producers can produce their own food. Consumers depend on plants and other living organisms for their food. Herbivores eat only plants, carnivores eat only animals, omnivores eat both plants and animals. Scavengers eat the dead plants and animals. Decomposers are microorganisms that eat dead plant and animal matter. A food chain shows how plants are eaten by animals who are then eaten by other animals. All plants and animals are important to maintain balance in nature. Children, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा and इस chapter की practice अब आप खुद से करेंगे.